करो नहीं कही है ये डंग मोरा ले नदी पेली पास पकड़ी ये जे पकड़ी ने ये रीते करा ने तो समझे ले तो મને ઝેર નાખશે। खेतर है हमारा रोहित भाई दोस्तों हम साकरिया गांव जहां हमारे रोहित भाई पटेल जिनका एक कुआं है, तो कुएं के अंदर एक कोबरा सांप जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में नाग बोलते हैं, जो हमारे लोकल लैंग्वेज में गोगा महाराज, नाग देवता, बहुत सारे नामों से ये प्रचलित है। तो ये अभी कुएं में गिरा हुआ है और थोड़ा उसने चढ़ने का ट्राई किया है लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा है। रेस्क्यू करने के लिए हमें बुलाया है, तो हम इसको अभी रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। तो रस्सी से हम थोड़ा एक पेड़ की टहनी को लटकाएंगे तो उसके ऊपर चढ़ के बाहर आ जाएगा। तो अभी इसको हम पकड़ के ले जाके जंगल में सही सलामत इसको छोड़ देंगे। तो हमारा जो अभियान है सांपों को बचाने का, तो हम ये अभियान में काम कर रहे हैं और ये जितने भी गांव वाले हैं वो हमारे सहयोग में आज आए हैं। तो हमें सांप को बचाने के लिए इन्होंने प्रयास किया है, तो ये गांव वालों के हम आभारी हैं। और ये जो लोग हैं और जो स्पेशली हमारे रोहित भाई, तो उनके हम बहुत आभारी है क्योंकि ये सांप को बचाने के लिए उनका प्रयास सराहनीय है। तो हम उनको दिल से सैल्यूट कर रहे हैं। जो एक जन जता रहे फिर बाजू भेद ना हांडी ने जो चढ़ी जाती थी जाई है बात अरे थोब लपा ऊपर थी जरा ना पान दो અને પછી ચડી જાય એટલે મને આવતા ચડી જાય ટ્રેનથી ના વાયર વાટમાં છે ને સાઈડમાં લઈ લેવું છે જાને નકર વાયર કાઢવા મૂસ બેઠા જંગલ चढ़ी जाए तो बहुत भाई जो वो पोटा जो चढ़ जाए तो चिंता नहीं हम दादा रात में ना मौज करवा ना नहीं पर ए तो ये अडाई ना बेत ना अडाई आ ओम फाय है इना ऊपर ने सर रात ने सर ए ने जो वो झाड़ू पा पकड़े दाम ओए जान बा हम खाइलाम ना से जा तो आओ जब लगा अब लगन कुआं पर जो आई तक काले जा पता है कैसे बराबर है ना पहाड़ जाओ थोड़ा का पानी करो और दोनों ये तो अंदर पड़ जाए तो अंदर से तो बढ़िया गिर जाए ये बहु आपका करता बहुत चाहता तो जाने से दो ने साथ जाने दो बस मैं आ तो लगे बनो बस आ जा साइड ऊपर तो थोड़ी ले साइड ऊपर तो होना चाहिए जाएगा आपने मैं ना तो जाओ चल ये नहीं ऊपर गया तो जल्दी खेतो ये छोड़ दे बड़ा ये सन आ दे लाओ ऊपर मान लो अड़ी लगा अड़ी जाओ कोई जाए तो इसलिए बेटा हेड बार मस्त मजा आई गयो છે પછી તો દેખે કોબરા આઈજા हेड बार बस बाबूजी सरस मजानी जग्या पर ले लो रोड पर बस ध्यान मराई तो रोड ऊपर रो इतना एकदम मस्त है दादा से भगवत देती थी दोस्तों। इसको अभी हमने
कुएं से बाहर निकाल लिया है। बहुत कुएं में पानी में अगर गिरा होगा तो थक गया है। तो वैसे भी बहुत शानदार जीव होता है ये, इसको गुगा महाराज। दोस्तों, इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है। अगर किसी बंदे को ये काट लेता है तो 1 या 1.5 घंटे में इंसान की मौत हो जाती है। अगर जो बुआदती, जो झाड़ फूक होती है, उसके चक्कर में हम रहते हैं तो इंसान को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन ये सांप काट ले तो हम 1 या 1.5 घंटे में सरकारी अस्पताल तो पहुंच जाते हैं। तो इसके जहर से ही बनने वाली जो एंटी वेनम जो दवाई होती है, उसके हिसाब से हम जो अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर जो हमें एंटी वेनम देते हैं, इंसान को ठीक कर देता है वो। तो जो इसके जहर से बनने वाली जो एंटी वेनम है, एकमात्र तोड़ है इसके सांप के जहर को तोड़ने का। तो किसी भी बंदे को काट ले तो किसी भी चक्कर में ना रहे और सीधे सरकारी अस्पताल में पहुंच जाइए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जो एंटी वेनम मिलता है, जो फ्री में मिलता है, तो इसको जिसको भी काटता है उसको बचाया जा सकता है। नहीं तो इसके जहर का कोई तोड़ नहीं है। इंसान को काट लेता है तो उसकी जो नर्वस सिस्टम होती है वो डाउन हो जाती है और 1 या 1.5 घंटे में इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, अभी इसको हमने रेस्क्यू कर लिया है, इसको हमने अभी पकड़ लिया है। तो हम इसको ले जाके सही सलामत जंगल में छोड़ देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। बस गाड़ी में एक डब्बू है, पार्सल ले लो ने। और दोस्तों, ये जो कोबरा सांप है, जो इसके अंदर जो जहर पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिक, वो हमें इंसान को मारने के लिए नहीं होता, लेकिन वो जो खुराक खाता है, जो चूहे मेंढक खाता है, तो उसको पचाने के लिए कुदरत ने दिया है। तो ये सांप जो 80% है वो लोगों को ऐसे ही डराता है, जैसे फुनकार लगाता है। और ये जो डराने की जो उसकी प्रैक्टिस है वो उसके हिसाब से आपको डराता है। ये ऐसे काटता नहीं है। अगर ऐसे काट भी लेता है तो 80% ये डराने वाला सांप है, डराता है। 80% वो जहर का प्रयोग नहीं करता, लेकिन 20% ये जहर हमारी बॉडी में डालता है। तो दोस्तों, ये सांप बहुत ही प्यारा है, कोबरा है, जो हमारे भारत के 4 मोस्ट वेनमस सांप है। उसमें से एक जहरीला कोबरा, जिसे हमारे लोकल लैंग्वेज में देवता भी माना जाता है। लेकिन हम देव या देवता मान के अगर या इसको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो ये अक्सर काट लेता है। जो 24 वर्षों से मैं ये सांपों की सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस है। अगर मेरी तरह कोई इंसान ये काम करेगा तो अक्सर वो शायद ही जी पाए। तो दोस्तों, सांप पकड़ने की एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। लेकिन अक्सर ये लोगों को ऐसा होता है कि मंत्र तंत्र बोलते हैं, तो मंत्र तंत्र के हिसाब से सांप पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको कान भगवान ने नहीं दिए, तो ये कभी किसी की बात सुनता नहीं है, क्योंकि ये वाइब्रेशन को कैच करता है और बार बार जिद निकाल के आजू बाजू जो वातावरण में गंध होती है उसको ये पहचानता है। तो दोस्तों, अभी इसको हम पैक कर रहे हैं डिब्बे में और इसको हम ले जाके जंगल में सही सलामत छोड़ देंगे। लाओ तो नहीं, तमें चिंता ना करो, नहीं कही है ये डंगोरा ले नदी पेली पार्सल पकड़ी। ये जे पकड़ी ने ये रीते करा ने तो समझे ले तो મને ઝેર નાખશે। આઈ જા હેડ બેટા, હવે તું છે ને બહુ ગરમ ના હેડ, આઈ જા જતરા મોય। चलो प्रेमથી જતા રહો મોય। तो दोस्तों, इसको अभी हमने डिब्बे में रेस्क्यू कर लिया है, तो इसको हम ले जाके जंगल में सही सलामत छोड़ देंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ। आवा कोई सवाल हो तो करो, છે કોઈને પ્રશ્ન? નાગ વિશે, હાપ વિશે? જો નાગની પૂજા કરતા હો તો મૃદનાગ પોચમજી। એટલો નાગ એકલો નહીં, પૃથ્વી પર જેટલા બી જીવ છે
જે નાગ સ્વરૂપમાં, સાપ સ્વરૂપમાં, એ બધાની આપણે પૂજા કરીએ છીએ. એટલે આપણા માટે નાગ એટલો પૂજનીય છે એવું નથી, પણ જેટલો જનાવરો છે બધાની પૂજા છે. બરાબર. આપણા બાજુ ખાલી 3 જ હાપ ઝેરી છે. એમાં એક નાગ, બીજો છે ચિત્રો અને ત્રીજો એક કાળોતરો. આ 3 જ હાપ ઝેરી છે. બાકી જેટલો દેખાય છે બધો બિનઝેરી. બદલો લેવાની ભાવના માણસ સિવાય કોઈ નામ નહીં. જો તમે કોઈ હાફ બદલો લેતો હોય ને તો સાહેબ હું માનતો નહીં કે ખેડૂત ઘેર પાછો જાય ખેતરોમાંથી. ખેતરોમાં લાશ જ હોય, જેવો આવે લાશ પડી જ જાય. એટલે કોઈ બી હાથને કોઈ બી જગ્યાએ મારો નહીં, જતો હોય તેને જવા દે. કોઈ કશું કરતો નથી બિચારો. પણ આપણી માનસિકતા એવી છે ને કે હાફ એટલે કઈ રીતે માણસ મરી જ જાય. આવી ભાવનાના કારણે લોકો હાફને માન નાખે. અને અમારું કામ છે લોકોનામાં સાચી સમજણ લાવે, હાફને ના મારો. આ હાફ એટલું કોઈ તમને કહી રહ્યો, આ તમારા બૂટ ઉપર આમ રહીને પકડી તો ઝેર છોડવું હોય તો એ ટેપું છોડી દો. પણ ઝેર એના માટે કિંમતી, એવું નથી કે નુકસાન નથી થતું. એટલે ઝેર એના માટે બહુ જરૂરી છે. એટલે એ કારણ વગરનું વેસ્ટ નથી કરતો. પણ બીવડાવો ખરું, આપણે નથી લડે જતી ખાલી બોય ચડે. આપણે કલાક ઉભારીએ ને તો એકબીજાને અડીએ નહીં તો બોય ચરાય ગયો. આ એવું છે. બીવડાવવાનું કોમ, બાકી કરવાનું કોમ નહીં. એટલે કોઈ બી જનાવર એમની કહેતું નથી જો સુધી તમે એને દબાણમાં ના લાવો, એને દબાવવાની તો સુધી નહીં કહે. આ હાથ તમારા પેટ ઉપર છે કે છાતી ઉપર જઈને ડિઝાઇન તો એની કહે. પણ જો તમે ભૂલે છો કે આજ પગા લાવ્યો અને ગભરાઈ ગયું તો તડ્ડાજુ ભલે. દાદા એ મચ્યું હાલો હું તમને એ કહ્યું. આ હાફ છે ને પેલા તો તમે ભૂવા પહાણજો ને એટલે પેલો લેબડો ખવડાવો. એનું કારણ તમને કહો. લેબડો ખવડાવો ને એટલે તમને પૂછે કેવો લાગે છે, તમે એમ કહો કે કડવો લાગે છે, એટલે સમજી જાય કે બિનઝેરી જનાવર કરી. ચમ કાં તો ઝેરી જનાવર કરી હોય ને તો પહેલાં તો તમારું નર્વસ સિસ્ટમ ખલાસ કરી નાખે, તમને સ્વાદની ખબર ના. એટલે એને ગમ પડી જાય ને કે ઓને કડવું લાગે છે એટલે સમજી જાય કે ઓને કંઈ કરી નહીં. એની ઝેર જોશથી બોલાવો અને પછી અગરબત્તીઓ આમ કરો ને બે લેબડાઓ આમ કરે. પણ ઝેર જ ના આવે તો ઉતરે હું બરાબર. પણ ઝેર એ કઈડી હોય ને અને ખબર પડે ને કે ઓને ગમ નથી પડતી તે બધી કહે કે યાર આવામાં બહુ મોડું થઈ ગયું છે યાર, તમે તાર દવાખાને લઈ લો. તરત જ હોય ગાડી પર લઈ જાય. પહેલાં બહુ આવું ચૂહતા હતા, બધો જોઈ ગયો હોય તો પહેલાં તેલનો કોગળો કરે. તેલનો કોગળો એટલા માટે કરે કે જો ચૂહવા જાય કોઈ ઝેર આવે ને તો લાળ ગ્રંથિમાં ભેગું ના થાય. જો લાળ ગ્રંથિમાં ભેગું થાય તો ભૂવો પહેલાં હોઈ જાય. લાળ ગ્રંથિમાં ભેગું ના થાય એટલે પેલો તેલનો કોગળો કરતો. તેલનો કોગળો કર્યા પછી છે તું કરો તેલના કોગળા કરી ડાયરેક્ટ ચૂહવા મળ ગમ પડે હમણાં. બોલો બોલો. આપણો કાકો હતો. હા ગમે એવું છે પણ એ ઝાડ નહીં નાખે. એ તમારા ઢોર વજનનું હમણાં બધા બરાબર. પણ દાદા હું એ જ કેવું છું કે શરીરમાં ઝેર શકની એ કોણ નક્કી કરે? કયું જનાવર કર્યું છે કોણ નક્કી? હું કેવું છું ને એમાં હરાજ જીવતા હોય કે કોઈ તો મારા પણ ભૂવો હોય તો લેતા હોય, હું આ નાક કહેડાવું અને એ બહુ મારા શરીરમાંથી કાઢી દેલા તું સાચું મોન. બાકી જર અપો કહી ને બીજો જનાવરો કહી ને તો મારા પાસે લેતા આવજો. તમારે ડોમડું કરવાની જરૂર પડે, ખાલી ફોન કરજો, હું એમ કહી દે કયું કહી રહ્યું તમે એમ કહો ઝડપ તો હું ઘેર બેઠા ઉતાર. તમારે અહીંયા આવવાની જરૂર ને મારો આવવાની જરૂર નથી. ખાંતરા બોલે નીકળી જાય. મને ખબર ઝેર આવતું જ નથી પછી હું ઉતરવાનું શું છે. ત્યાર સુધી આપણે જૂના પાટા ચાલે, આપણી જૂની માન્યતાઓને લીધે ચાલ્યા. આ સોરોના મનમાં હાપોનો બીક કને ગાલી આપણે પોતે આપણે જ ગાલી. બરાબર છે. હવે આપણો સોરો છે કે તો સ્કૂલમાં ભણવા જો તો શિવાજી મહારાજની વાર્તાઓ હોભળી, પછી જોશીની રાણી લક્ષ્મીબાઈની હોભળી, બધી હોભળી. પણ આપણો સોરું નોનું હોય ને તાને કૂકું હોય ને તૂતું હોય ને જુદું હોય કર્યું હોય અને સોરું મુઠ્ઠે વાળી ઘરમાં પહેરજો તો પછી શિવાજી મહારાજ બને કોઈ દર ના આવે. કાકા આપણે નોનપણથી જ બીક ગાળી દીધી હોય, ગરોડી ત્યાં બીતું હોય ને મકોડા ત્યાં બીતું હોય એટલે નોનપણથી પેલું તો મારવાનું શીખરાયું અને કોઈક મોટું આવી જાય તો મુઠ્ઠે વાળી ઘરમાં પહેરજો. એટલે આ પાસે કોઈ દર બાદ ના બની. જીવનમાં આ મેસોરોના સ્કૂલમાં જઈને લોકોના નાના સોરાના મગજમાંથી કાઢી દે છે. કારણ કે મોટા માણસોના મગજમાંથી નહીં નીકળે. કારણ કે એક વખત ઝાડની ડાળી વળી જઈને મજબૂત થઈને વોકી જઈને વોકી રહે. दोस्तों साकरिया गांव जहाँ रोहित पटेल जिनके कुएं से हमने एक कोबरा सांप को निकाला था, इसको हमें फॉरेस्ट में रिलीज़ करने के लिए लाए हैं. तो
ये कोबरा सांप को हमने रिलीज़ कर दिया और ये स्पीड में भाग के चला गया है। तो दोस्तों ये सांप अपने अभी नेचर में चला गया है। दोस्तों हम ऐसे रेप्टाइल को, ऐसे लोगों के बीच जो अक्सर चले जाते हैं, तो हमको कॉल आता है, हम जाके इसको पकड़ के सही सलामत जंगल में हम छोड़ने के लिए लाते हैं। तो दोस्तों हम इसको छोड़ने के लिए जंगल में आए थे, तो अभी इसको जाने दिया है। तो दोस्तों हमारा काम है और हमारा ये अभियान है जो हमने स्टार्ट किया है कि लोग अक्सर ऐसे रेप्टाइल को घर के आगे पीछे देख लेते हैं, तो गलत जो धारणाएं इस सांपों के बारे में लोगों के जहन में है, तो ये जहन में जो धारणाएं लोग घुसा के बैठे हैं, तो हम ऐसी धारणाओं को हम लोगों के दिमाग से निकालते हैं और ऐसे रेप्टाइल को जंगल में लाके ऐसे सुरक्षित इनको छोड़ देते हैं। क्योंकि ऐसे जो सांप हैं उनको प्रकृति में बचे रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे रेप्टाइल हो गए तो ये जो प्रकृति का जो हमारा जो इको बैलेंस है, हमारा जो चक्र बोलते हैं, वो सही सलामत चलेगा। तो दोस्तों ये हमारा जो अभियान है सांपों को बचाने का, अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।